कई बार ना मम्मियों को धोखा देना बड़ा थोड़ा टेढ़ा काम आता है। तो एक थी थोड़ी तेज तरार माता, वो गई बाहर, लड़की को लगा मम्मी को धोखा हो गया, चलो थोड़ा और सोती हूँ। मम्मी गई अंदर बाथरूम में, बाल्टी भरी पानी की और सोती लड़की के ऊपर डाल दिया। बोले जब जाग रही है तो फिर ले नहा भी ले। फिर तो वो जाग रही है या सो रही है, वो बोले न बोले, लेकिन भीतर तो वो जानते हैं ना कि हम जाग रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब कहते हैं हम सो गए। तो जब नींद हुई तो वो किसने जाना? बुद्धि तो सो गई थी, पर ये भी तुम्हें मालूम चलता है ना कि पड़े पड़े में एक टाइम पे आकर के सो गए थे हम, और फिर एक टाइम पे आके नींद खुल गई थी। तो नींद खुली, नींद आई, ये दोनों जिसने जाना, जिसने देखा, वो तो कभी सोया ही नहीं। वो तो कभी सोया ही नहीं। तो जिसने नींद का आना और नींद का जाना, सुषुप्ति का आना, सुषुप्ति का जाना, स्वप्न का आना, स्वप्न का जाना, जागृत का होना, जागृत का जाना, जिसने जाना ये सब, वही चैतन्य है। उसके अलावा सब जड़। As simple as that. One is known, one is the knower. The knower is the ever conscious and the known is jada, inert. When you say, I haven't understood this, Gurumaa, so this means you are looking into the intelligence and seeing whether you got it or not. So the one who is looking into the intellect is not the intellect, is separate from the intellect. And intellect got it or not got it is witnessed by me, the ever conscious, ever truthful existence. So inert is what? The one who doesn't know that it exists, doesn't know who else exists, and needs someone to know it. Right? And the Chaitanya, or the ever conscious, can be very well defined as the one who knows I am. I know I am, and if I ask you, how do you know that you are? What would be your answer? You might say, well, my intellect is saying that I exist. But this intellect is not functional in the deep sleep, and yet you know I am. Now sleep has come, now deep sleep has come, now my sleep is gone, now I have woken up totally, now I am half asleep, now I am fully awake. The one who is knowing these differences of consciousness is the ever observant witness. The witness is the ever conscious Chaitanya, Sanskrit word. Satya, the eternal. And Asanga, meaning always aloof. You see, now the light is falling on my clothes. But if I rub my cloth, will the light be rubbed? If I pour a glass of water on my cloth, will the light get wet? And if I take a scissor and cut this into piece of two, would the light get cut? So you are in original that light on whom the death cannot strike, because death can only strike at the body. No pain or misery can reach you, because that can reach only up to mind and not to you. You are the ever awakened light of the light, Chaitanya, the witness, the observer. If I say witness in Hindi or Sanskrit, it becomes Sakshi. So the Sakshi is the Chaitanya. And other than the Sakshi, whatever it is Jada, is inert. But when you see the body-mind as me, then diseases of the mind and body are inflicted on you.
What I am speaking is very, 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 very subtle, and it takes a long time after listening and contemplating to finally break through. Okay, now I get it. It's not tough, it's not difficult, it's only that your reflection and understanding has to reach at a point where it's a bingo, okay, now I get it. And that's a very liberating moment. When you will see the mind as you, then all the fickleness and shallowness and diseases and emotional trauma of the mind will be inflicted on you. Yeah? But if you see yourself as the witness, as the observer of the mind, then all the diseases of the mind will stay in the mind but will not implicate you. Let's say, again I bring you back to the cloth. If the cloth is torn, I can throw it away and get a new one. Right? But if I get too, oh, I love this. Sometimes people, they gift me something, and while gifting, they're saying, it's so expensive, Gurumaa. It's so special. I went to so-and-so place, and this is something which is very unique, and it's so expensive and so wonderful. And I can see the difficulty with which they are parting it away, giving it to me. And I really feel like, don't give it to me. Don't give it. Keep it with yourself. The possessiveness or the obsessiveness which one creates with like money or things. I'll just give you one story. Long ago, almost 22 years ago, a very rich man came to this ashram. This ashram was just like an open field at that time. The Bodhisattva building was still like half done, but sometimes I used to stay here. It was dead of the night. We never had this kind of electricity. We never had some gensets. And pitch dark, lot of snakes, scorpions, everything is here. So I have lived amongst the snakes. You open up the shoe rack and the cobra is sitting there. And sometimes it is right in your bedroom. And in the dead of the night, we always switch on the light first or switch on the battery, the torch battery, and look, okay, floor is clear. No Shivagana. Okay, now you can go to bathroom. So a rich man, a Gujarati rich man, came to me from Mumbai. And we were sitting outside in the garden, and he says to me, Gurumaa, what do you think? How much money would you need to construct a satsang hall over here? The Bodhi Sambudh hall was not ready. I said, maybe, it's just a rough idea, so maybe 50 lakh rupees. I'm saying 22 years ago. And he said, not a problem. I'll give you the money. Just get it constructed. I said, okay. And so for the next 1 hour, he was like talking about it and talking about himself and this and that and glorifying himself that he had, built up so many temples and dharmshala and this and that. Okay. Now 22 years gone, I'm still waiting for that money. 22 years gone. After that, I might have gone 20 times at least to Mumbai. I never saw face of that person again. And he took 1.5 hours sitting with me and boasting. And I was pretty gullible. I was little, Naya Guruji, na. I was not trained to be one. I'm just a new one. I was a naive Guruji at that time. So I believed whatever he said. And I said to Hari Milan, Hari, don't have to worry. This one person has come. He'll be giving all the money. We can make a satsang hall. Our old people will be so happy. And he said, okay, even he was excited. And then nothing happened. How come he was so proud, and he was actually a rich person, but how come he couldn't do anything? Because it's difficult to let go. It's very, very difficult to let go.
It's mine, it's mine, it's mine. When I'll die, I'll take it all with me on my chest. It's mine. We do the same thing with our mind. We see this mind as me. So the identification is very strong. Hence, the diseases of the mind have become diseases of you. But you are actually like the light who can't be made wet, can't be cut, can't be spoiled. Pure, unattached. That is who you are in your reality. Chaitanya, the ever-conscious being. Not the body, not the mind. But the association and the obsession with the mind, with the body is so strong that we see ourselves not as Chaitanya, ever conscious, but we see ourselves as Jada Sharir. The innate body, the innate mind. So जड़ क्या है और चेतन क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना बड़ा आवश्यक है. तो ये होगा स्टेप 1. पहले इसके ऊपर बहुत अच्छे से मनन करना चाहिए कि मैं कैसे देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं. और यही कारण है कि रोज शाम को मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम रोज 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 शाम को ये स्तोत्र पाठ आदि शंकराचार्य भगवान का दिया हुआ हम लोग गाते हैं आरती के बाद, गुरु आरती के बाद, कि तुम कौन हो. चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम. भाई यहाँ बैठे तो चिदानंद रूपा शिवोम शिवोम, मंदिर से उठ के गए तो रूम तक जाते जाते शरीर बन जाते. हाय बड़ा शरीर दुख रहा है, हाय कमर बड़ी दुख रही, घुटने बड़े दुख रहे, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो अभी तो शिवोम शिवोम कर रहे थे, तो अभी क्या हो गया, फिर से शरीरोहम हो गया. सो शिवोहम से शरीरोहम. तो यूँ समझो, वो गुरुजी ना, वो रोमन देवता था ना, तो वो कहते हैं उसको श्राप मिल गया. श्राप ये था कि वो बहुत भारी चट्टान पहाड़ के ऊपर चढ़ाएगा, पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगी वो तो रोल होकर नीचे आ जाएगी. उसको श्राप मिला था. तो वो फिर से ऊपर धकेलता है और फिर वो नीचे आ जाता है. तो उसको फिर से शुरू करना पड़ता है. बस ये गुरुजी का काम यही हुआ पड़ा है. गुरुजी ऐसे धक्का लगाते, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, तुम शिवोहम. गुरुजी गए किनारे तो फिर शरीरोहम. गुरुजी अगले दिन फिर शुरू होते, हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, हम तो साक्षी रूप है, शिव रूप है ना. हाँ जी गुरुजी, हाँ समझ लग गई. गुरुजी गए इधर और बुद्धि गई उधर और फिर गिर गए, फिर शरीर में आ गए. फिर हो गया, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया, हाय मेरा कल क्या होगा, हाय फलाना क्या होगा, ये क्या होगा और वो क्या होगा. ऑब्सेशन, ये ऑब्सेशन. जैसे वो बीमारी होती है ओसीडी, है ना, ऑब्सेसिव बिहेवियर हो जाता है. हाथ ही धोई जा रहा है, नहाई जा रहा है, शंका ही करी जा रहा है सबके ऊपर. तो ये लोगों को अज्ञान की ओसीडी हो रखी. अज्ञान नहीं छूटता, देहभाव नहीं छूटता, अभिमान नहीं छूटता, देह से जुड़ाव नहीं छूटता. वो कई कहेंगे हाँ नहीं वो तो ठीक है, हमने सुन लिया, हम आनंद स्वरूप है, पर आया तो है नहीं आनंद. अब आएगा कहाँ से? इस हड्डी मांस के बिगड़ने वाले शरीर में तो मैं मेरी करके बैठा है, तो अपना आनंद स्वरूप दिखेगा कैसे, प्रतीत कैसे होगा? तो क्या जड़ है वो जानना, और कौन चैतन्य है ये जानना, और जड़ मैं नहीं हूं ये जानना, और मैं ही चैतन्य हूं ये जानना, और इसी का निश्चय हो जावे तो फिर अगली मंजिल और आएगी वेदांत की, कि फिर उसके बाद तो सारा जड़ जगत हम मिथ्या है ये साबित कर देंगे, और एक ही चेतन अस्तित्व है और कोई दूसरा है ही नहीं. इस पॉइंट तक आ गए तो फिर तो जीते जी मोक्ष है, मुक्त ही मुक्त है, अपने मुक्ति स्वरूप को जान लिया, बात ही खत्म हो गई. ना समझ लगे तो फिर सारी जिंदगी निकल जाती. बस वही चलता, समझ रहे हो ना, वो देवता ने, है ना, चढ़ा रहा है चट्टान को ऊपर, और ऊपर चढ़ते ही वो फिर नीचे. तो गुरुजी वही देवता होते, शिष्य की बुद्धि की चट्टान को चढ़ा रहे हैं ऊपर ज्ञान के शिखर पर.
और चेला फिर से नीचे गिर जाता है। तो जब तक चेला गिरना बंद ना कर दे, बेचारे गुरुजी को तो छुट्टी नहीं मिलती। हम तो यही बोल रहे हैं, हमें जल्दी छुट्टी दो, समझ के खत्म करो सियापा, बस बात खत्म। देह मन बुद्धि में हूं ही नहीं, ये निश्चय एक बार क्लियर हो गया, मैं ही चैतन्य स्वरूप हूं और चैतन्य ही ब्रह्म है, उसके बाद क्या बचा फिर।